हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लीडिंग यू। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में कहाँ तक हो गया था? मेजर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी हो गया था। आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। ओके, इसमें हमारा ये हो गया था टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग में हमारा जो क्वेश्चंस हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग द फॉलोइंग इज। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकंड, द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग द फॉलोइंग इज। सेकंड का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hierarchy is correct with reference of levels of biological organizations? थर्ड क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड। ऑप्शंस क्लियर है? हमारा आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर बायोलॉजिस्ट सो इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री? फोर्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाई स्टडी ऑफ बायोलॉजी रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिफ्थ का आंसर फटाफट। फिफ्थ का आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम्स, इससे क्वेश्चंस हैं। ओके ओके, सिक्स क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज। आंसर सिक्स का आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स? सेवन का आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, when an atom ionizes what happens? Answer is D. Next, which of the following statements is not true? Options हैं proton orbits the nucleus at fixed distance. Second option है the atomic nucleus contains a fixed number of protons. C है atoms can become stable by gaining or losing electrons. Last है atom will react with other atoms only when there are vacancies in their outermost electron cells. नाइन्थ का हमारा आंसर ए वाला है। ओके, प्रोटॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियर एट फिक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, यहाँ पे क्या ऑप्शंस होगा इनमें से? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है? सी, नेगेटिव। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या फिल होगा? बी, वैलेंसी।
नेक्स्ट, चेंजिंग द नंबर ऑफ फिलअप, यहाँ पे would change it into an atom of a different element. आंसर देखो फटाफट, आंसर इज ए. नेक्स्ट, the reason liquid nitrogen evaporates so easily is that it lacks. थर्टीन का आंसर है हमारा डी. नेक्स्ट, 14, when an atom gives up an electron and acquires a positive charge, it is called. Answer is C. Next, the number and arrangement of electron in an atom's outer energy level determines the atoms. 15 answer is C. Next, atom of different phosphorus isotopes. 16 answer is D. Next, an atom that normally has in its outer cells would tend not to form chemical bond with other atoms. यहाँ पे क्या होगा? D. 17 का D. Next, a sulfur atom has 6 electrons in outer shell. As a result, it forms Philip covalent bond with other atoms. Answer is A. Next, an ion is formed when an atom. Answer is C. Next, which of the following substance does not play a role in normal human physiology? Answer is B. Next, 21. The ionization of a sodium atom to produce Na positive is an example of. Answer is A. Next, which of the following is a trace element required only in small amount by most living things? 22 answer फटाफट. 22 B. Next, 23. Your body contains the smallest among of which of the following? 23 answer is D. 23 answer is D. 24. Role of molybdenum is. Answer is A. नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्वेश्चंस हैं. 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल? आंसर इज सी. नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन in a crystal. If potassium chloride is placed in water, what do you think happens? Answer is D. 27. Molecules are always moving. Some molecules move faster than other. Philip is a measure of their average velocity of movement. 27 answer is D. Okay, next 28. A substance that
Philip, is considered to be a chemical compound? 28 answer is D. Next. 28 हो गया. 29. Which of the following is not chemical reaction? ऑप्शन देखो फटाफट आंसर दो. 29 आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a Pepsi soft drink consists mostly of sugar dissolved in water with some carbon dioxide gas, makes a fuzzy and makes the pH less than 7. In chemical terms, you could say that Pepsi is an aqueous solution where water is the Philip, sugar is a Philip, and carbon dioxide makes the solution Philip. आंसर दो 30 का. 30 का आंसर है सी. नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन है. ओके. 31 क्वेश्चन. An ionic bond is formed when? Answer is D. Next, atoms share electrons unequally in a bond. Option 32 का आंसर is D. Next, if a pair of shared electrons are more attracted to one nucleus than to other, they form a Philip bond. Answer is A. Next, maximum energy is required to break. 34. Answer is B. Next, what type of energy is present in a covalent bond? Answer is C. Next, where are hydrogen bonds important to life? 35. C. Next, where are hydrogen 35 हो गया था. नहीं 35 C. Next, where are hydrogen bonds importance to life? ये हो गया था, डबल करा दिया क्या मैंने. चलो कोई नहीं. 35 का C. 36 का है B. नेक्स्ट 37. फटाफट देखो, उसके बाद से हमारा कैडल ऑफ लाइफ वाटर का टॉपिक है. फटाफट बताओ 37 का आंसर. 37 आंसर है. नेक्स्ट 38. ऑफ द फॉलोइंग चॉइस द pH ऑफ द लीस्ट एसिडिक सॉल्यूशन इज. 38 आंसर इज ए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैडल ऑफ लाइफ वाटर से. 39 क्वेश्चन. द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग सेल्स इज. 39 आंसर इज बी. नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स वर इक्वली अट्रैक्टेड टू हाइड्रोजन nuclei and oxygen nuclei, water molecules would be. 40. Answer is B. Next, most of the unique properties of water result from the fact that water molecules. 41. Answer is D. Next, ice float because. 42. Answer is D. Next, mixture of oil in water forms an emulsion if a protein is
shaken up with such as emulsion. 43. Answer is A. Next है central atom carbon. Organic compounds are present in all living cells. They all share the following characteristics. 44. Answer is D. Next, how many electrons must carbon gain from other atoms to have a stable valence shell? 45. Option is C. Answer. नेक्स्ट है हमारा केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. फोर्टी 45 का आंसर हो गया था शायद. फोर्टी 45 का आंसर था सी. इसमें क्वेश्चन देखिए 46. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स? 46. आंसर इज डी. 46. नेक्स्ट 47. Carbohydrates, lipids and proteins are formed from their basic building blocks by. Basic building blocks by. 47. Answer is C. 46 का आंसर डी था. 47 आंसर इज सी. नेक्स्ट 48. इसमें मैच करना है आपको. एक साइड ये बायोमोलिक्यूल्स दिए हैं, एक साइड उसके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं. ऑप्शन देख लो फटाफट. एक ऑप्शन सी रहा लास्ट वाला. 48 का आंसर है हमारा बी वाला. ओके 48 का आंसर बी वाला है. नेक्स्ट 49. Which of the following functions is more characteristics of carbohydrates than of proteins? 49. C. Next 50. Maltose, lactose and sucrose are. Answer is A. ओके तो आज हमारे व्हाट इज़ लिविंग जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, उससे हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले डेज में करते हैं. अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और कोई भी क्लास मिस ना हो. ओके थैंक यू फॉर द वॉचिंग.